Deepti Pandita ma'am, the Department of Pharmaceuticals, Delhi Pharmaceutical Sciences and Research University, Delhi. Give a big round of applause and thank you so much ma'am to grace this occasion by your presence in your busy schedule. Now I request our Honorable Chairman Sir to felicitate our Professor Shanitra K. Sir, Dean AKTU Lucknow, Director BBT and IIT Lucknow. Please come forward and receive the felicitation of planter and memento. Give a big round of applause for Professor Shanitra K. Sir by giving his precious time to grace this occasion. I also request respected Mr. Yogesh Arjun to please come forward and receive the felicitation. Chief Commercial Officer Global Operation Salad Care Limited, Ahmedabad, Gujarat. Please give a big round of applause for Sir. Thank you so much, sir, for coming here and grace this occasion by your presence. I also welcome Mrs. Jasmine Ma'am, GMDIC Muzaffarnagar to come forward and receive the felicitation of planter and memento. Please welcome ma'am. We are thankful to you. You give your time and grace this occasion by your presence. Thank you so much, ma'am. I also welcome Dr. Vikram Singh, sir, General Manager, Bagzir Pharma Private Limited, Haridwar. Please come forward and receive the felicitation. We are very thankful to you, sir. You give your busy time to grace this occasion by your presence. I also welcome Dr. Rajesh Agarwal ji, General Manager R&D, Modi Mandi Pharma, Meerut. Please come forward and receive the felicitation. Give a big round of applause for Dr. Rajesh Agarwal ji. Thank you so much, sir, by giving your precious time and grace this international conference by your presence. We are thankful to all the honorable dignitaries on the stage that they give their time and make this event a great success and make it memorable for future. Thank you so much to all. I also give a big round of welcome to Mr. Azam Ali Khan, CEO Trends, IIT Roorkee. Please give a big round of applause for Mr. Azam Ali Khan. We are truly honored, sir, by your time in your busy schedule and grace this occasion by your presence. Please welcome committee. Carry out the best ceremony as a token of appreciation and gratitude to Mr. Azam Ali Khan. Thank you so much, sir, for coming. Once again, I request our Honorable Chairman, Sir, Dr. Anil Singh and Director, Sir, please come forward and felicitate our Mr. Azam Ali Khan, CEO, TIDES IIT Roorkee, by giving planter and memento to him. Sir, we are truly honored by your presence. Thank you so much. Give a big round of applause for Mr. Azam Ali Khan. Thank you so much, sir.
Thank you so much to all the honorable dignitaries on the stage, off the stage, for gracing this event. Now, we all welcome you to a transformative gathering where knowledge meets innovation. The academic industry conclave is not just an event, it is a bridge between ideas and impact. Today we unite brilliant minds from academia and dynamic leaders from the industry to spark collaborations that shape the future. Get ready for insightful discussions, groundbreaking innovations, and opportunities that redefine learning and professional growth. Let us turn conversations into actions and visions into reality. In today's fast-evolving world, the gap between academia learning and industrial application is shrinking, and this conclave stands as a testament to that synergy. Here, thought leaders, educators, researchers, and industry pioneers converge to exchange insights, spark innovation, and create pathways that redefine the future. This is not just a meeting of minds, it is a powerhouse of possibilities to real-world application, from fostering young talent to shaping industry-ready professionals. Today's discussion will pave the way for a stronger, smarter, and more interconnected ecosystem. So, get ready for an event
that is not just about learning, it is about redefining the future of education, industry, and innovation together. Let us make it count. Now, I hand it over the mic to Miss Khushbu ma'am. Please come forward. Good afternoon, everyone. I welcome you all here in International Conference on Pharma Advancement 2025, AI-driven academics, industry, and a startup ecosystem, Academia Industry Conclave. In today's rapid evolving world, collaboration between academia and industry is no longer just an option. It is a necessity. While everyone acknowledges the importance of such partnership, the real question is in what aspects that they collaborate and what mutual benefits can they derive from each other. Industries possess real-world challenges, large-scale data, infrastructure and funding, while academia brings deep researcher, expert manpower, innovation and cutting-edge technology and advancement. Through structured collaboration, industry can accelerate research and development, gain access to fresh talent, and leverage academics experts to solve complex problems. In other words, academia benefits from practical exposure, industrial funding, and opportunities for real-world application of research. This panel discussion aims to explore these critical aspects. How can industry and academia institutions work together to drive innovation? What are the key areas such as AI-driven drug discovery, big data in clinical research, biotechnology, innovation, and advanced pharmaceutical manufacturing, where academia and industry can collaborate to accelerate breakthrough exchange, skill development, and drive real-world impact. And most importantly, both sectors ensure a win-win partnership that leads to groundbreaking advancement and global competitiveness. To address these pressing questions, we are honored to welcome our esteemed, our chief guest for today's Academia Industry Conclave, Dr.Deepti Pandita, Associate Professor DPSRU Delhi, to Industry Academia Conclave. Please welcome them with a big round of applause. We are also privileged to have distinguished panelists and industry leading joining us for this important discussion. Our moderator, Mr. Azam Ali Khan, CEO TIDES Business Incubator IIT Roorkee. And our panelists, please, तालियां बजते रहनी चाहिए. Panelist Dr. Rajesh Agrawal, General Manager Research and Development, Modi Pharma, Mayor. Professor Shalin K. Sharaf, Dean AKTU and Director, Babu Banarsi Das, Natak Institute of Technology, Lucknow. Mr. Yogesh Shah, sir, Chief Commercial Officer, Global Operations, Salah KR Limited, Ahmedabad, Gujarat. Mrs. Arushi Jain, Joint Managing Director, Gulshan Polyols Limited, she'll join us with the online mode. Ms. Jasmine, GMDIC, Muzaffarnagar, Dr. Vibhanshu Vikram Singh, Director, Bexil Pharma Private Limited, Haridwar. We extend a warm welcome to all our esteemed guests, panelists, and participants. Your insights and expertise will drive meaningful discussions on the setting, industry-academia collaboration, fostering innovation, and unlocking new opportunities for research and development. Let's embark on this journey towards impactful partnership and groundbreaking advancement. So we'll start with this panel session, and now I would like to invite our principal of Pharma, Mr. Sajid Kumar sir, to welcome all the dignitaries. Thank you. Good afternoon to everyone. Firstly, I would like to welcome all dignitaries and faculty staff, invited guests, students, research scholars. Welcome you all in Academic Industry Conclave. Today's Academic Industry Conclave chief guest is our Honorable Dr. Deepti Pandita. Dr. Deepti Pandita is professor in the Department of Pharmaceutics, DPSRU, Delhi.
Pharmaceutical Sciences and Research University, New Delhi. She is member Board of Governors and FC Committee, DPSR University. Head PhD section, Chairperson Sexual Harassment Committee at DPSRU University. She has done her PhD in pharmaceutics from Jamia Ahmedabad and post-graduation from Manipal University. Dr. Pandita has 22 plus years of teaching and research experience and previously was FCT postdoc fellow at University of Madria, Portugal. Dr. Deepti received major research grants from AICTE and SAR under Research Promotion and Young Scientist schemes in 2012 to 14 and 2012 to 15 respectively, and Best Pharmaceutical Scientist Award in 2024. Haryana State Branch APTI. She has received grants for conducting FDPs, national and international conferences and workshops from AICTE and DST in 2013 and 2014, and international travel grants from ICMR and DST for attending conferences in Malaysia, Thailand and US. She also received DST Haryana grant for IPR workshop in 2017-18. Recently, she had received two major institutional grants of rupees 8 crore from DSIR CRTDH scheme under Affordable Health Scheme, and second is 2 crore DST first grant for Department of Pharmaceutics as the key investigator CEC. Dr. Pandita was conferred with Distinguished Research Award and Notable Research Award in DPSRU University First and Second Research Promotion Awards held on 5th April 2022, and in the Second Research Promotion Award held in National Science Day 28 February 2023. She was conferred with Outstanding Research Award, Distinguished Research Award and Notable Research Award for her publications in 22 plus and 10 plus impact factor journals. She has earned to her credit several books, chapters and 150 plus publications in peer-reviewed journals with high impact factors like drug resistance updates, Journal of Controlled Release, Material Science and Engineering, Trends in Food Technology, Drug Discovery Today, Molecular Pharmaceutics, Bio, Macromolecules, Nanotoxicology, etc. with cumulative impact factor of 400. She also has 2 Indian patents to her credit, and she has guided 7 PhD and 53 M.Pharm candidates. Her present area of research include nanomedicine and nanotheranostics, bioconjugates, drug discovery, and reposing 3D printing for personalized and precise medicines. Target phytochemicals delivery. Dr. Deepti has been included in top 2% of the most cited scientists for 5 consecutive years on the basis of database credited by Stanford University, US, since it was published. It is all about our Honorable Chief Guest of Academy Industry Conclave, and now I request to ma'am to proceed the. Good afternoon, everyone. So, thank you, Dr. Sachin, for the nice introduction, and it's my privilege to be here, sitting here in this international conference that has been conceptualized by one group of institutions, and with a very end topic, which is current topic of today, that is AI-driven academics, industry and startup ecosystems.
Pharma Advancement 2025. And the topic it says everything that it is an integration of artificial intelligence, AI, and life sciences. And what we are witnessing in the last 5 years to 1 decade is a revolution in and pharma industry is at it's at a forward step. And the panel discussion on this topic is going to explore the critical aspects, that is, how can industries and academic institutions work together to drive innovation? Because there are many, we need a bridge between academics and industry. We don't have that. So it's a very excellent question which today will be discussed on the dais, that how industry and academic institutions they should integrate. Next is what are the key aspects for the AI-driven drug discovery, big data and clinical research, biotechnology innovations, advanced pharmaceutical manufacturing, where academic and industry can collaborate to accelerate breakthroughs, enhance skill development, and drive real-world impact. So basically, when we talk of AI can be in drug discovery. When we talk of pharma, it is being integrated with clinical trials. We have then we in the precision medicine. So these are the three important areas where AI is integrated with the life sciences. And we are here with an excellent cumulative experience of industry and academic experts on the stage. And for starting this panel discussion, I will be introducing our moderator for today, Mr. Azam Ali Khan, CEO, Tides Business Incubator, IIT Roorkee. Okay, Mr. Azam Ali Khan, CEO and Member Secretary of Tides Business Incubator at IIT Roorkee. He is an esteemed leader in entrepreneurship, innovation and business incubation, and alumnus of IIT Roorkee. He holds a Bachelor of Technology degree and an MBA in Finance from the University of Mumbai, and has played a pivotal role in fostering startups and technology advancements. And under his leadership, Tides has been recognized as best incubator in the country among Tier 3 towns by DST BIRAC, reflecting the team's dedication to fostering innovation and entrepreneurship. In addition to his role at Tides, he has extensive experience in upstream, offshore oil and gas sector, power generation and finance services within the Indian market. His professional background includes positions in offshore drilling services, oil and gas asset acquisition, investment banking, treasury management, strategy and business development with major global oil and gas companies and finance institutions. Mr. Khan has also contributed to the entrepreneurship ecosystem as a guest speaker and jury member at the events such as the Startup Uttarakhand Bootcamp 2024. As CEO, Mr. Khan leads and mentors Tides to promote the startup ecosystem across the region, leveraging his skills in negotiations, leadership, strategy, mentoring, and business development. His multifaceted expertise and commitment continue to drive innovation and entrepreneurship, making him a distinguished figure in the academic and business communities. So I welcome Mr. Azam Khan to moderate the session, and it's wonderful to read your background, and surprisingly that you do not have a pharma background, and so we need to learn a lot of entrepreneurship skills, and I'm very happy to meet you today because startups is very important nowadays, and in having startups, encouraging the students. Because our young generation is so talented right now, they are so aware about the society. So we really need to mentor them so that they can do wonders. So I welcome you, and so you can start with the panel discussion. Thank you very much, Professor Pandita. I mean, I'm humbled by, when you read such a long
introduction of mine. I don't think that I deserve that introduction anymore because I'm still a learner, I'm still a student. I learn a lot from the startups, the young founders who typically come to my office every single day coming up with some new idea. And that's the reason when you say that we need a bridge between academia and industry. I think startups are the bridge. The young students are that bridge which can be built and which can be not just allowed but encouraged. And I always say this thing that whenever we have such a discussion that we generally spend more time on successes. I think we need to focus also on the failures and not just allow people to fail but encourage people to fail. Fail, get down, get up again, then again try. And that's where we can develop an innovation supportive society. I spent a lot of time in Scandinavia, in Norway, and Sweden and Denmark. And the reason why these countries are doing well is because they have a very fantastic ecosystem and a cushion for failures. So probably if we can develop in our country some kind of that cushion, we can nurture innovation, we can nurture entrepreneurs who will be successful for us. And this is the need of the hour. So thank you very much, Mr. Pandita, for that. And thank you very much, Ms. Khushbu and Dr. Ajay Gupta for inviting me here today. I think this is the first time I'm here in this campus. We have a very beautiful campus. But before, without much ado, I think let's jump onto the panel discussion today. And the topic has been chosen quite nicely that they are combining the three major components or the three major buzzwords of today, AI, artificial intelligence, which is somehow leading the national intelligence. Here we were talking about national intelligence and industry and academia. Industry academia interaction has been oft repeated on multiple forums that we need to have that. But probably there are still some cliches, some wrinkles which need to be ironed out before we say, okay, we have a very smooth industry academia collaboration ecosystem or regulatory environment. To understand this thing from one academic and one person from the industry, let me invite Professor Sharin Saraf and just try to get your views on how do you think this industry-academia collaboration can lead to growth of innovation happening in the campuses and how it should occur, because definitely it helps in the innovation ecosystem. But what are the things which you see as bottlenecks and what do you see as, because you are also in the administration of one of the leading institutes, what is your vision there? Good afternoon all. First of all, I'd like to thank the organizer of this conference for giving me the opportunity. Topic is pretty apt, and what I feel is we are into academics. We have been there in academics for the last, say, 25 plus years. What we have observed is the industry generally remains hesitant, and that is why that bridge has never been built. As we know, creating an infrastructure for say a very small thing, it's a big task. Setting up an industry, the investors are like making the industry as per norms, DLP and GLP and whatnot. And for other activities, probably they won't even have the space, neither the money nor the time. So the least that an academic institution can give is, we have got our auditoriums, we have got our halls. So any kind of activity that this industry desires, they can use our spaces to do those activities. That is the first thing and the simplest thing that can be done. Then comes our laboratories. We have got our laboratories. Quite a few institutions have got very equipped laboratories. So I don't think all the industries have time for some kind of research or even troubleshooting. That can be done very easily by academic institutions if we collaborate. Because we have got postgraduate and PhD students also who are working. Those students can take a topic and troubleshoot it for you. So the industry can get results at a much lower cost and pretty quick. So that's what I think where we should start with. And then we can go further into research, and there are so many things where we can go.
So I'd like to have the other universities also what they are saying. And that's a wonderful thing that you're saying that the academia is ready to welcome the industry on the campus, and probably there is some kind of trigger which is needed, and both the students as well as the teachers are, the faculty are ready to embrace them open-handedly. Let me bounce off the same question to somebody from the industry. Professor Yogesh, when the academia is saying that they are waiting for you open-heartedly, and I'm also from the industry, frankly, on practical ground, there is a disconnect. Because what are the requirements and the expectation of the industry? They are sometimes not met on the ground, or maybe not met at the same pace at which it is expected to be there. What is your experience? And let's be very frank, what are your expectations? Thank you very much. In my position, there is a word named written as commercial. So everything, of course, in industry comes with the commercial things, things and all. Thank you, Professor, for opening ethics eye. Sometimes, yeah, there are some limits. We have to work it across because there are a lot of testing, there are a lot of many things we have to look into. But on the other end, when I go to my office and daily I see vacancies, there is a list of vacancies from HR where I have to fill. And there is a limit also I have to fill in this time. So these vacancies are mostly from skilled workers, mostly from skilled people we want. Day before yesterday, I have 3 plants. I have near about 42 vacancies. So this is a live example in the area. I want people for F&D. I want people in electrical maintenance. I want people in business development. I want people for production. I want people at a working level. I want people in hygiene. So I hope you will understand to what level industry is open to you. This is number one. Now on the other side, we have lot many projects for R&D projects and all, and of course we always entertain that. If there is something, we have already collaborated with 1 or 2 institutions in Gujarat where we are supporting them, we are giving them their this development programs, and we are facilitating them, we are supporting the students to come up, we provide them the live case studies also. We to a level, yes, whatever is our bandwidth, I hope you will understand. Whatever is our turnover, whatever we are, we try to push in and we want this academic grounds to support us. And we want skilled people along with a good attitude. So I'll again remind you, we want skill, but with a good attitude. Now, of course, when I'll be going for a speech, I'm putting more on AI today. So we are pushing in more AIs, this thing, and we already started because I am holding the international arm also with this company. So we are moving further. Even sir, we are going to get a JV with the international academy also very soon. So we have some, you can say, development programs in our hand where now international markets want to come to India and develop their product. So we have 2 F&Ds, one is for Nutra, one is for Pharma. So where we are developing more and more things. And on the other hand, of course, we have plants and we want people and we'll be happy. I'm not saying, I'm hoping on an open platform, we will be happy to get JV with you also. Because we have one plant here in Roorkee, in Salute. So we'll be opening that, so it will be feasible for us. So I'm clear cut and very open. Yes, we'll form a JV. Thank you. Just a follow-on question on this, because you touched about getting the resources from the campus. Let me focus more upon the collaborative projects. Are you doing this thing already with the academic institutions?
And on those collaborative projects, what has been your learning, positive or negative? Maybe one. This is trials. So it is not positive, it is not negative. But frankly speaking, once we are going it across, sometimes it's good, sometimes it's bad. I'll give you the live example. One of the best collaboration JV been done at the time of COVID with Bharat Serum and IIT Hyderabad. It was the biggest collaboration JV been done. क्या हुआ वैक्सीन निकला आईटी हैदराबाद को बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला उसके बाद हमको ओपन डाटा देयर वाज अ रियल डाटा बीइंग गिवन दैट टाइम एंड एट लास्ट दैट वैक्सीन वाज देयर इन दैट डाटा so this is one example which I got it across and I quoted here also sir yes we got some developments and we are in trials of few products which we are in JV and we are moving along with the R&D of academic institution and we are on a track. So we are, मैं ये बोलूँगा, we are gelling with them. So we are on a track and we are open to put a budget also. That's wonderful actually, and there are innumerable stories of positives coming out of this collaboration between the industry and the academy. COVID is a very apt example of how exactly it was done. Maybe I would invite Professor Pandita to summarize this particular question. What do you think from the inputs which we have received from both the ends? So I think we have started. We are taking baby steps. I won't say that it is a major step. It's a baby steps, and we need to reach there. The industries, very few actually industries have started having a proper policy-driven collaboration with the academy. There is no policy-driven collaboration, neither it is in the private sector nor in the government sector. So I think if there are some policies which come up, the industry integration should come in the curriculum. So if it comes in the curriculum, then the bridge will, then it will be bridging will be successful. So right now what's happening, we are just using the networks for the collaboration. There is no proper guideline, So I think we need to, both the sides have to work on it. Academics as well, the industries, both the sides. Then only, and both the sides have to know that what are the advantages, what are the pros and cons of the, of the collaborations. If they take students during their curriculum, they're getting extra hands on it. Now, for example, we are into, for example, my university, we are collaborating with the industry for, we are making up a policy for that, where the industry takes the students for the PhD programs. So they come to the university, they take the students for PhD, the scholar will work in the industry and taking care of the IPR, how the other things will be shared. So there are many things which need to be discussed, and this is how the integration will be successful. So I think that's. No, I think that's a very wise opinion which you have shared with all of us. Or this is the way forward, probably. Let me jump on to the next question. We have Ms. Arushi Jain with us. I think she has joined us online. Mrs. Jain, can you hear us? She's not there? Okay, no problem. So let me then move on. Dr. Rajesh Agarwal. When we are developing the standards or the best practices, क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में इन स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए there is a dialogue which is happening? And do you think this, that if it is not happening enough, उसकी ज़रूरत है? How can we make that happen? Again, in a systemic, because if we have it more like a serendipity, that is not the way things will come out.
if it is more systematic way, ensuring that the academia is there, the industry is there, and we have the best global practices. What is your view on that? Uh, Thank you, Dr. Arjun, for this pointed question. I think this is need of the hour. And I would like to start with the thing that what industry needs is a trust building with the institute, which is very important. And institute should work in a way that there is a trust building happens. So for that, there are many things. One of the thing is policy or structure, framework, or a structured MOU or a structured document where the checklist, steps, deliverables, and time frame, the cost things, who will share, the intellectual property sharing. So all those things should be defined. I think this is the area where we are just working with the institute for, okay, I know somebody or some institute has infrastructure, we go to them, our big project. But then nobody bothers what is the outcome, how much it is going to cost. Even from the institute side, this is a lack. So this is very important. Problems are there. Industry is looking forward to have problem solvers, troubleshooters. I think this can happen in the institute, and institutes have a lot of resource. They have infrastructure already in place. Many institutes are having wonderful infrastructure. If you walk down to their, I was part of the DPSRU where they're setting up a GMP facility. So small trials can be done, development can be done, brainstorming can happen, ideas can flourish, the ideas can be put into the structured framework. And to just to make this point with the underline that pharmaceutical industry is a policy-driven, the regulatory-driven industry. So we need to do a work, a research in that manner. Because ultimately whatever you do is going to be filed somewhere, regulatory is going to review it. So if you don't do a project or activity in a manner and a fashion and in a way where the data cannot be produced or reproduced or presented to the regulator, then the entire work is just null and void. So there are policies, there are regulatory requirements. The institute should understand what are the industrial regulatory compliances, which is very important. We have a GMP rule available, we have pharmaceutical research, new product development, new product definition, the product registration procedures, they're already there. The things have been listed. And I know many of the academicians, those who have initially worked for 4 or 5 years in the industry, they know it very well because they have hands-on experience of working on the problems. They know what are the problems, what are the questions coming out from the submissions, regulatory submissions, and not to forget the intellectual property. I think this is what is done in the countries which you name or any developed countries. They start the work with the emphasis on creating an intellectual property on it. And when you have this thing in your mind, so you have to do a lot of brainstorming. You have to do a lot of back-end research work. The published data, you have to screen all those things. So I think things are there. It's between the mutual agreement of an institute and the industry, because industry work in a very subjective manner. So they want to have a problem. If they have any problem, they want to have a concrete solution of it in a given time. It should be realistic. It should be scalable. So these are the things which can be done through an understanding. I think important is to build a trust that yes, we can do a problem solving. We have a capability. Our data is authentic. Our data is having a quality assurance applied on it. So that is important. This is my take on this. आपने बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन किया है मेरे सवाल का
क्योंकि जो जो पॉइंट आपने हिट किए हैं, so this is exactly the reason why you are also from academics, because you have done PhD as well as you are working in the industry, and this is a kind of mix I think probably which is needed as of now, कि वो mix, वो talent जो हम लोग hire कर रहे हैं अपने academics में भी, उसको कुछ understanding हो. If they are just a PhD background, तो प्रॉब्लम होती है कि असेसमेंट में, एनालिसिस में, कि इंडस्ट्री को चाहिए क्या, बिकॉज वी आर इन दिस रिसर्च बैकग्राउंड, रिसर्च प्रॉब्लम. दैट इज द रीजन इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज शिफ्टिंग इज फोकस मोर फ्रॉम बेसिक रिसर्च टू अप्लाइड रिसर्च, करेक्ट. और वो बहुत जरूरी है. अगर हम लोगों को इंडिया में स्टार्टअप्स लेकर के आने हैं, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आज जब हम कहते हैं कि भारत में हार्डवेयर बेस्ड स्टार्टअप्स होने चाहिए, हार्डवेयर बेस्ड स्टार्टअप तभी हो सकते हैं तो हम रिसर्च करें विद अ फोकस ऑन commercialization, commercial viability. So we should have a target in mind, we should have a time frame in mind, like Mr. Yogesh said that industry is wishing, industry is willing, but then outcome has to come. मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डू यू थिंक इस तरह का, जैसे फार्मेज एक SEZ बनाया हुआ है अहमदाबाद में, लेकिन वो है सिर्फ इंडस्ट्री के लिए. IIT मद्रास या फिर और भी IIT जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोग्राम निकाला था, रिसर्च पार्क था, इट वाज दिस इंटेंशन ओनली कि हम वहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडेमिया साथ साथ रखेंगे. लेकिन कहीं कहीं कुछ रिसर्च पार्क में वो बहुत फ्लरिश किया, कहीं कहीं वो उतना फ्लरिश नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन. डू यू थिंक ये एक मेथड हो सकता है इस इंटरेक्शन को प्रमोट करने का, या फिर इस इंटरेक्शन को एक सिस्टमैटिक रूप देने का रिसर्च पार्ट का, या और क्या तरीके हो सकते हैं कि हम इसे इंश्योर करें कि ये है वो? Like how it can be successful where it has not been. Yeah. That's your question? Yes. Like, Yes. what are the reasons that it has not been successful? Other than, yeah, exactly, and also other than research पार्ट, क्या और ऐसे मेथड्स हो सकते हैं? I think when we talk of these, so maybe location, number one, the education system in that area, and whether the candidates, because all the things have to be done by the people, by the students or the scholars. So they should be interested in that location. So if I'm like, can I know the success, or if they were unsuccessful, were they reflecting the region also? आपका बिल्कुल एक लोकेशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैं अहमदाबाद का एग्जांपल लूंगा बिकॉज मैं अहमदाबाद को बहुत क्लोजली जानता हूँ. फार्मा से कितना अच्छा सिस्टम बनाया है जहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां, चाहे वो थर्मोफिशर हो या फिर और कंपनियां हो, एक एग्लोमरेशन बना दी है. Ahmedabad is a hub of pharma industry. Exactly. So that is a major reason for the success. That could be the major reason for the success. तो इसको हम लोग एक तरह से अगर इग्नाइट करना चाहें इन टियर 2, टियर 3 टाउन्स में, तो वो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एकेडमिक स्ट्रेंथ है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं हरिद्वार रुड़की का बनूंगा और वहाँ पे भी फार्मा का एक बड़ा अच्छा क्लस्टर बना हुआ है, लेकिन उस क्लस्टर को हम लोग कितना यूज कर पा रहे हैं फॉर न्यू इनोवेशन, क्योंकि वो एकेडमिक से कितना जुड़ेगा और क्या जुड़ने का मेथड होना चाहिए? I think we need to work on the networking part, because networking बहुत important है. Then only we can make our students aware of the places where they can go. And I think अभी भी awareness जो है, if we talk of academies, since I am from academy, awareness is with the institutions who are already, the institutions which are already established. But there are so many education institutions or regions where awareness is not there. So maybe then we can clear off, that can be the solution for the location, or Of course. See, what has happened? We had a meeting with DCK, the Panchita. There is a guidelines being changed now. There is a state-wise office of DCGI also.
So now there is a state office and a DCA office. अगर हमको WHO GMP चाहिए तो दोनों तरफ के लोग आते हैं. So we were having this thing, how we can promote. We said cash come here. हम लोग हमेशा कहते हैं. We said to let develop more of academia and academic institutions and all, talk to them, get along with them, and make them more updated. So sir, we have my colleagues are there with R&D, F&D, and all. उसमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है. Frankly speaking, regulatory. Of course, I have an international regulatory team. I have a domestic regulatory team. That is very very stringent and regulatory affairs, ladies and gentlemen, my young friends. This line is going to be one of the best line in the future. You see तो है ही है. Regulatory affairs will be something which you will be interested, because there are lot many governments, lot many policies, lot many you can say infrastructure requirements, which is not only coming in India, even in international also, it is changing every day. So this is one thing where we have to learn and understand. These are the basic things. Once we come across that, we can. So, like in Ahmedabad, yes, we have this type of a requirement, or why not we do it across with the other Indian state also? कभी-कभी तो ये आता है why DPSRU and Jammu Kashmir is there, Sikkim is there. So they are finding out some places. They are finding out some states where they will be opening up, and soon we will get. So this is the update. So yes, they are working on that, more of regulations. I want to add what Dr. Rajesh has said initially, that what industry wants and what we are teaching is different. So it has to start from the ground level, that we have to teach them what industry wants. Yeah, and you're absolutely right, because that is the next question which I am getting for Dr. Singh. मैडम ने बिल्कुल सही कहा. हम आज पढ़ा रहे हैं, और जनरली जब मैं भी पढ़ता था IIT में, तो हमारी किताबें लिखी होती थी इंजीनियरिंग की 1950 के ज़माने में. और जब मैं सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू देने गया, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ पूछी. तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं. उन्होंने कहा कि IIT के ऊपर क्या आपको नहीं पढ़ाई? तो देन आई फेल्ट कि हमें पढ़ाया कुछ जा रहा है, इंडस्ट्री कुछ मांग रही है. और दैट इज द रीजन इंडस्ट्री इज आल्सो हेजिटेंट, बिकॉज उनको पहले 2-3 महीने ट्रेन करना पड़ेगा, सो दैट एटलीस्ट दे बिकम यूजफुल. एंड बाय द टाइम दे बिकम यूजफुल, स्टूडेंट सोचता है कि हाँ मुझे नेक्स्ट कहाँ देखना है. तो इट इज अ फ्री ऑन फील्ड ट्रेनिंग विच द इंडस्ट्री हैज टू प्रोवाइड. क्या हम उस तरह से, अगर मैं योगेश जी की बात पूरी दूं कि अगर मैं टैलेंट एक्विजिशन पे ही जाऊँ, तो क्या हमारे स्टूडेंट्स दे आर एम्प्लॉयबल? वो बहुत जरूरी है कि क्या इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार है वो कि नहीं. और वो तभी होगा जब हमारा कंटेंट, हमारा कोर्स करिकुलम, पेडागोगी वो ऐसी होगी जो कि इंडस्ट्री रेडी है. और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. मैं थोड़ा एक मिनट लूँगा कि AI के ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज है फैकल्टी की, क्योंकि उनको अपनी रेलेवेंस दिखानी है कि भाई दे आर रेलेवेंट. व्हाट आर यू टीचिंग व्हिच इज नॉट अवेलेबल इन ऑन इंटरनेट? व्हाट आर यू टीचिंग व्हिच बुक इज नॉट अवेलेबल? अगर आपको एक बुक का क्रक्स लेना है, मैंने अभी, एंड आई एम सेइंग इट ऑन ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म, मुझे अभी एक 10 करोड़ का प्रपोजल लिखना था. मेरे पास टाइम नहीं था. मैंने चैट GPT खोला और मैंने उसमें लिखा, प्लीज राइट अ प्रपोजल फॉर दिस हैविंग कंटेंट्स एंड सेक्शंस दिस, और उसने मिनटों के अंदर पूरा प्रपोजल 10 पेज का तैयार किया. मैंने उसमें कुछ थोड़े चेंजेस किए और मैंने वो सबमिट कर दिया एज अ रिस्क. बस एक्सेप्ट, बिकॉज मैंने उसमें अपने हिसाब से जो मुझे उसमें लिखना था वो किया, लेकिन उसने स्ट्रक्चर बना दिया. अब मुझे स्ट्रक्चर के लिए टाइम देने की जरूरत नहीं.
मुझे जो रिपीटेटिव चीजें उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है। फैकल्टी के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है, उनका खुद का रेलेवेंस क्या है। आज बहुत से बच्चे क्लास नहीं आते, वो कहते मैं क्यों आऊँ, जो पढ़ा रहे हैं उसी किताब का करेक्शन मेरे पास है, जो पढ़ा रहा है जिसने किताब लिखी है उसका खुद का लेक्चर अवेलेबल है ऑनलाइन, तो मैं इनसे क्यों पढ़ूं, मैं ओरिजिनल से ना पढ़ूं। दैट इज द चैलेंज व्हिच आई थिंक एज अ फैकल्टी वी आल्सो नीड टू गो थ्रू, कि भाई मैं अपने आप को रेलेवेंट कैसे बनाऊं। You have some opinion about it? Yes, actually you have hit the my soft part, you know, that I talk of ethics a lot, research ethics. So आपने AI tools की बात की है, AI tools को use करना is not wrong, but AI tools को ethically use करना बहुत important है. Exactly, but ethics is a fine line. Very fine. It's a very fine line. It is more related to the conscience of the individual. Because हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत, सबको पता रहता है। अंतरात्मा की आवाज आती है, वो बोल देती है कि भाई आप गलत कर रहे हो या आप सही कर रहे हो, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन AI ने चीजों को इतना ज्यादा सुलभ बना दिया है, इतना ज्यादा इजी बना दिया है कि अब लोग सोचते हैं कि क्या मैं एथिक्स के चक्कर में पढ़ूं, वो प्रपोजल खुद लिखूं, या मैं सिर्फ 2 मिनट में टाइप करूं, क्योंकि मुझे पता है कि 4 सेक्शन है, बजट भी 4 सेक्शन में बनना है, उसमें मुझे डिवाइड करना है, मुझे ये काम कर दें, थोड़ा सा 10%, 50%, 20% आप चेंज करो, हो जाएगा। हेल्प लेना गलत नहीं है, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है, फ्लैगराइज नहीं करना, वो इम्पोर्टेंट। हेल्प किसी की भी लीजिए, बुक्स की लेते हैं, टीचर्स की लेते हैं, आप AI की लेते हैं, उसमें गलत नहीं है, लेकिन कॉपी नहीं होना चाहिए। अब ये इसमें AI में आजकल बच्चों का लिखना खत्म हो गया है। बट एनीवेज, लेट मी कम बैक टू द मेन टॉपिक एंड डॉक्टर सिंह, इसमें मेरा आपसे सवाल ये है, जैसे मैडम ने बोला था कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट एंड दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द चैलेंजेस, देयर मे बी सेवरल अदर चैलेंजेस आल्सो इन योर प्रोफेशनल लाइफ। आपने क्या क्या ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं टिपिकली, और आपको अगेन do you think they can be improved or maybe jumped over? Thank you. जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हैं, बट मेन जैसा सबने कहा है कि टीचिंग में एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में जो इंडस्ट्री को चाहिए, बहुत बड़ा गैप है, उस पर हमें करना है काम। दूसरा एक the work culture of academia and industry are totally different. We need to be more communicative to bridge that gap. Secondly, the thought process also. Like academia is more towards research, and whereas industry is more towards the practical aspects. We have to find a way to bridge that, and that is only possible through faculty development. We need faculty that has actually worked in industry before, so that they have at least some exposure to the requirements of the industry. And industry also has to promote developmental programs for the students, to offer them internships, seminars, practical teaching basically. I think that's wonderful. Rather, आपने जो अपना स्टेटमेंट शुरू किया कि there is a जो वे ऑफ वर्किंग है वो बहुत अलग है बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। अगेन आई विल फ्रैंकली एडमिट, जब मैं इंडस्ट्री से एकेडमिया में आया
तो इट वाज लाइक कि मैं हाईवे से एकदम से छोटी रोड पे आ गया, अब मुझे आराम से हल्के हल्के चलना है। बट लेकिन हर किसी के अपने अलग अलग पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं। आई थिंक एकेडमिया में आपको बहुत इंडिपेंडेंस मिलता है, एक रियल मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट करने का, कुछ इनोवेट करने का। जैसे कि आज मैं यहाँ आ पाया, तो आई थिंक इंडस्ट्री में अगर मैं होता तो मैं बिल्कुल भी टाइम ही नहीं था, या बॉम्बे में या दिल्ली में बड़ा मुश्किल था। हालांकि आप लोग आए हैं, बड़ा जबकि ये बहुत अच्छी बात है, बट बहुत कम टाइम मिलता है उसमें। तो आई थिंक वो एक दो अलग अलग कल्चर हैं। मैडम आपसे मैं पूछना चाहूँगा, हाउ मच डू यू अग्री विद दिस? क्या ये ऐसा है इन योर व्यू, और अगर है तो इसका कहीं कोई मिड पॉइंट है? Like Penny, as I mentioned earlier, that our curriculum is not industry oriented, and what Sir has added at in the end that we need to encourage the internships. I think internships, बहुत से public health and other there many fields जहाँ पे internships आपकी curriculum में है 6 months. We do have research in our pharma curriculum, but we do not have the internship. Like students go for industry projects, but they are very few. It is not inside the academic system, so they can or they may not go. So. Industry people have to come and visit the academic institutions, and the scholars and students have to go and visit the industry. तो दोनों तरफ से फ्लो बहुत जरूरी है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो दोनों तरफ से important। जब तक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में नहीं आएंगे और स्टूडेंट इंडस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे ड्यूरिंग देयर एजुकेशन, तब तक वो आगे का that is what they are getting into, after their education, तो उन्हें वो पता नहीं चलेगा। I have very good example like 1.5 year back हमारा जैसे placement होता है, so one of our very excellent students, she was placed in some good industry with an excellent package, and when she came back visiting the institute, then she said कि ma'am जो मैंने इंटरव्यू फेस किया, she was a topper. उस टॉपर, it is the words of a topper that मैंने इंटरव्यू फेस किया है इंडस्ट्री का, and there were many things which I could have learned as a student. जो gap, there is a gap. She told me that there is a gap. So I invited that student to come and like interact with the students now, with their juniors to fill that gap. तो she was a practical example कि gap है, वो हमें ऐसे करना है, like the students, alumni network was important I guess. Our alumni who are working in industry, we can invite them, we can encourage them to collaborate with your parent institution, and we need to have some programs where students can go to the industry visit करना student के लिए आसान नहीं है। There are lot of limitations, and if industry call करती है तो 6 बच्चों से ज़्यादा नहीं allowed है। I'd like to say a few things on this. जैसा कि आपने कहा, because we have been framing the syllabus, so I happen to be the chairman of that committee, which frames the syllabus for the entire sector of education. We are bound by certain regulations. Let me tell you very frankly. Pharmacy Council of India ने एक unified syllabus बना के दिया है जिसपे सबको पढ़ना। It is very unfortunate. I am saying it on an open record. पहले ऐसा नहीं था। We had a flexibility. Right? जो पहला syllabus बना था UPTU का सन 2000, वो मेरे टेबल पे बना था। We tried because I have been with the industry for 7 years. ऐसे तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी जो सीखा मैंने, I tried to incorporate that. अब PCI का काउंट किया, तो हमने क्या किया? We took permission from the PCI कि आपने minimum regulations दिए, maximum नहीं किया, so we can go over and above. We did that. हमने उस पर hospital training डाली जो पहले नहीं थी, PCI के syllabus में नहीं, industrial training डाली। अब इसमें जो मैडम कह रही हैं, I agree with her.
बच्चों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने में दिक्कत हो रही है, इंडस्ट्रीज आर नॉट गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं इंडस्ट्री से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा दैट एज अस व्हाट शुड आई से corporate social responsibility or maybe relationship, that would be a better word to use. यदि हम बच्चों को थोड़ा सा इंटर्नशिप्स के लिए प्रमोट करें, ट्रेनिंग के लिए प्रमोट करें, and ultimately you can choose based on them वो कौन से आपको लगता है वो एम्प्लॉयबल है। बिकॉज व्हाट वी वर इन दिस इंडस्ट्री, हम ये करते थे, जो ट्रेनिंग हमारे पास आते थे, से वी हैड 10, हमें जो 3 अच्छे लगे हम उनको जब खत्म होता था कहते थे इसके बाद आ जाना। सो इफ दिस कैन हैपन, बच्चों को भी फायदा होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी फायदा होगा और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। और इसमें एक चीज और, सिर्फ बच्चे नहीं, आई वुड रिक्वेस्ट द इंडस्ट्री टू एंटरटेन आवर फैकल्टी मेंबर्स ऑल्सो। वो आउटडेटेड हो रहे हैं, बिकॉज सी आई हैव गॉट 450 कॉलेजेस ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो मैं जानता हूँ कि व्हाट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी। ये सब थोड़ा यदि होगा, मे बी वी कैन हैव अ ब्राइटर फ्यूचर। और जो दूसरी एक और चीज, करिकुलम में बहुत ज्यादा भी हम इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, वेयरइन वी हैव गॉट 3 डायमेंशन डेवलपमेंट। उसमें स्किल फैक्टर बहुत बड़ा है, तो वो करिकुलम रिवाइज होने वाला है विद इन एन ईयर और 2 विल बी। Wonderful. It's good to know because that was our question कि मैडम ने बोले थे कि हमारे जो इंडस्ट्री और जो कोर्स करिकुलम में जो बहुत डिफरेंस है, इट इज गुड टू हियर फ्रॉम यू सर, इट इज वेरी रिवेल्ट। बस एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, इंडस्ट्री चैरिटी नहीं करेगी, इंडस्ट्री चैरिटी नहीं करेगी। स्टूडेंट को भी एम्प्लॉयबल होना चाहिए, ट्रेनिंग में सिंसियर होना चाहिए, और उस स्टूडेंट को ट्रेनिंग कौन सी देनी है वो उसके एटीट्यूड के हिसाब से फैकल्टी को क्रिएट करना चाहिए। ये नहीं है यहाँ मिल रही है अपॉर्चुनिटी आप चले जाओ, 2 दिन के बाद वो कहता सर मेरा मन नहीं लगता है, मेरा तो इंटरेस्ट बहुत है, वो सर ने बोला इसलिए आप 10 बच्चों का इंटरव्यू लेना शुरू करो। आई एम सॉरी टू से बट आई फील एम्बरेस्ड कि क्या लेवल है। अगर उसकी ट्रेनिंग की एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, मतलब अगर उसको ट्रेनिंग देने लायक नहीं है, तो एम्प्लॉयबिलिटी तो बहुत दूर की बात है। सो यहाँ पे एकेडमिक्स पे एक क्रिएट होना चाहिए। देयर आर स्टूडेंट्स हु आर गुड एट एश्योरेंस, देयर आर स्टूडेंट्स हु आर गुड एट राइटिंग, देयर आर स्टूडेंट्स, एवरी स्टूडेंट हैज देयर ओन स्किल। कुछ लोग बहुत आगे होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग उनको प्रमोशन की जरूरत होती है। बट अगर ट्रेनिंग के लिए कोई आया आपको 2 दिन के बाद कहता है कि मैं मेरा इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री तो अगली बार से उस कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट को चुनेगी। दिस इज एन एरिया व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस्ड। इंडस्ट्रीज ने अब धीरे-धीरे कोविड के बाद लगभग सबने बंद कर दिया, टेकिंग एडवांटेज ऑफ कोविड। उससे पहले सब इंडस्ट्रीज एज ए एलुमनाई, एज ए सीनियर, वी यूज्ड टू प्रमोट भी नहीं आए कि 2 बच्चे ट्रेनिंग करना है नियर अबाउट कॉलेज, MIT से बच्चे, there are professors here. We used to say नहीं बुलाओ उनको, कराओ ट्रेनिंग। But when we see the quality of the students, it's I'm sorry, but the things are not in good shape. Sir, to add, IDMA has this thing in mind. We are doing it. I myself have some internship students in my class, so we are working on it. So this question will be raised from the institution. We are working. So on behalf of IDMA, yes, this question will be raised and we are working. Thank you, sir. Please be here. और इसमें सर एक चीज और मैं कहना चाहूँगा, because we are talking about the curriculum. Probably by next year we will be having a curriculum for B.Com, wherein we will be having say a kind of specialization in the last 2 years. तो वो जो आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, तो जैसे किसी ने मान लीजिए रेगुलेटरी अफेयर्स है, तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें ट्रेनिंग नहीं लूँ। So I think that thing would be sorted out in a say very short span of time. That's great. Actually, I am inclined to agree with Rajesh on that. क्योंकि one statement, industry is not doing charity because industry need to keep itself sustainable.
There are thousands of employees which need to be given salary on 30th of every month. That is inevitable, irrespective of whether it is in laws or profits. So we are not doing charity. I think how we can improve the quality of students, probably faculty have a big role to play in this. Because if, as you rightly pointed out, that faculty also need this refreshers course, which probably is not happening in the industry at least. If this is something which we can institutionalize, we can definitely communicate or convey the up-changing values within the industry to the students in a much better fashion. वो एक बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमारे पास वो सिस्टम बन जाता है, स्टूडेंट्स की इंडस्ट्री तो ट्रेनिंग होगी ही होगी दैट ईयर, लेकिन फैकल्टी की कैसे ट्रेनिंग होता है, कैसे वो लोग इंडस्ट्री में आता है 2-3 महीने का 1 महीने का रिफ्रेशर कोर्स, ना कि कोई योगेश जी लोग आए यहाँ पे और ट्रेनिंग देते जब वो जाए वहाँ पर और वो ट्रेनिंग. I think that is a very good suggestion. Actually, मैं जानता हूँ. I've seen people. I've never seen an industry. Video colleges. तो जब तक हमारे टीचर्स नहीं देखेंगे, उनको रियल जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है एक्सपेरिएंशियल लर्निंग, कहाँ से आएगा? मैं एग्री विद दिस, यदि ये मौका मिलेगा या मैं कोशिश करूँगा, आई ट्राई एट माय लेवल दैट इफ आई कैन इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इन द यूनिवर्सिटी, because there are colleges, government के तो हैं, practical teachers and training institutes के definitely हैं, but unfortunately private sector के लिए कुछ नहीं, they are not. So hands-on लेने के लिए, I'll try to put some clause in that. And in due course of that, they can communicate that to the students also. Like practical aspect जो है सर, वो बढ़ाना है. That also we are taking care of. I think ये बिल्कुल क्योंकि यही क्वेश्चन जो हम कह रहे थे शुरू में कि फैकल्टी की रेलेवेंस क्या है, क्योंकि ये चीज आपको एआई नहीं बताता. जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हम लोग बात कर रहे हैं वो एआई वहां फेल हो जाता है, बिकॉज एआई ओनली गोस टू द हिस्टोरिकल डेटा. इट कैन नॉट प्रेडिक्ट, इट कैन प्रेडिक्ट ओनली बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री. नया क्या आने वाला है जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, उसके लिए फैकल्टी को एक कदम आगे मेहनत करनी पड़ेगी और वो प्रोजेक्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन और इसका जो एक अनफॉर्चुनेटली मैं यूज करूंगा वो ट्रैप है कि भाई 3 प्रोजेक्ट और ले आए 4 प्रोजेक्ट कि इंसान एक ही क्या करेगा, क्लासेस भी लेगा, एडमिन डिग्री भी लेगा, फिर प्रोजेक्ट भी करेगा, फिर अपने प्रमोशन भी देखेगा, फिर घर भी करेगा, टाइम ही नहीं बचा. और बच्चे हैं उसकी क्लास में 150, तो वो इंडिविजुअल कैसे इसको सपोर्ट कर पाएगा. आई थिंक दिस इज रियली वंडरफुल बिकॉज एटलीस्ट वी हैव अ टेक अवे. फैकल्टी का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, अलॉन्ग विद एनईपी का जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कंपोनेंट है उसको कैसे कैसे. This is wonderful. Let me come to our representative from the government. और गवर्नमेंट का रोल मैडम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है. हम लोग चाहे जितना बोल लें, क्योंकि at the end of the day you are the one who is creating the facilities or regulations which is driving both the industry, giving funding to the academics, which is actually running the whole ecosystem in some way or the other. यहाँ पे जब आप DIC को represent कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि और क्या प्लेटफॉर्म इस तरह के हैं जो कि गवर्नमेंट ने प्रिपेयर किए हैं स्पेशली स्कॉलरशिप को. जैसा कि आपने बताया कि मैं DIC से हूँ और DIC का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो DIC बेसिकली काम जो करती है वो इंडस्ट्रियल प्रमोशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और हैंड होल्डिंग का करती है. और इस टाइम पे गवर्नमेंट जो 2 तरह से काम कर रही है कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए वो ग्रांट्स दे रही है, फंडिंग दे रही है, जिसके बारे में आप सभी अवेयर हैं, लेकिन साथ ही वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए इंडस्ट्रीज में वेरियस पॉलिसीज लेकर आ रही है. लाइक क्योंकि जो MSMEs होती हैं उनके पास स्पेयर फंड्स नहीं होता है जिससे कि वो रिसर्च को अप्लाई कर सकें अपने इंडस्ट्री को बेटर करने में. तो उसके लिए सब्सिडीज हैं MSME पॉलिसी के अंतर्गत. सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, रैम्स स्कीम है जो वर्ल्ड बैंक है वो भी फंड कर रहा है, जिससे कि MSMEs में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको सब्सिडी दी जा सके. दैन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है फॉर पेटेंट फाइलिंग, हैंड होल्डिंग भी कर रही है, साथ में लाइसेंस के लिए भी गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग कर रही है. दैन वी हैव वेरियस सब्सिडीज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज आवर स्टेट UP गवर्नमेंट.
और जो लाइसेंस फाइलिंग है उसको इजी और स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमारा जो निवेश मित्र है उसके माध्यम से सारी एनओसीज और लाइसेंसेस दिए जा रहे हैं ताकि इंडस्ट्री अदर फैक्टर्स में भी अपना देख सके कि वो रिसर्च कैसे अपने इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकती है। पहले क्योंकि इंस्पेक्टर रहा तो इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज थी वो उसी में रहती थी कि हम अपने आप को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को ही कैसे चला सकें, लेकिन अब उनके पास थोड़ा स्पेयर टाइम बचता है कि वो अप्लाइड रिसर्च को अपने यहाँ लगा सकें। देन वी हैव अटल इनोवेशन मिशन में लैब्स वगैरह गवर्नमेंट फंड कर ही रहा है और उसको कमर्शलाइज भी कर रहा है। एमएसएमई पॉलिसीज में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छी पॉलिसीज लेकर आई है जिससे कि आप नई इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, पुरानी इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजीज अप्लाई करके आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फंडिंग है काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट कर रही है। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली काफ़ी अभी इस समय लिक्विडिटी बहुत है गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। और मैंने खुद देखा है कि सिंस 2014-15 जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2015 में, और 2015 से लेके अभी तक हर साल कुछ न कुछ नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं। अभी आई थिंक इस बजट में 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव पॉलिसीज। AIM है, स्टार्टअप इंडिया फीड फंड है, DST बहुत सारे प्रोग्राम उसमें लॉन्च करता है। साथ साथ स्टेट राज्य के स्तर पर भी काफ़ी प्रोग्राम लॉन्च किए जा रहे हैं। हालांकि हमारा IIT रुड़की तो मेन कैंपस उत्तराखंड में पड़ता है, लेकिन हमारा एक कैंपस ग्रेटर नोएडा में भी है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उस कैंपस में हम लोग काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं राज्य सरकार के साथ। तो अभी 5G का प्रोग्राम भी हम लोगों को मिला है राज्य सरकार के। एक कैंपस सहारनपुर में भी है, वो भी मिले। तो इस वजह से हमारा जो मतलब कि कॉन्टैक्ट है और इंटरेक्शन है वो दोनों सरकारों से होता है, तीनों सरकारों से, राज्य सरकार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की और सेंट्रल गवर्नमेंट। मुझे लगता है मेन इशू यही आ जाता है कि जो हम पढ़ाई करते हैं, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है, और जो हम अप्लाई करते हैं फील्ड में वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ आपकी व्यथा, क्योंकि मैंने भी दिया है जो आपने वो पुरानी किताबें पढ़ी, और जब मैं आके देखता हूँ तो उसमें वो कहते हैं कि 15 कॉन्सेप्ट इकट्ठा लग रहे हैं। तो हम तो सोचते रहते हैं सीरियल वाइज कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और वहाँ प्रैक्टिकल में तो कहते हैं 10-15 इकट्ठा है, सॉल्व करके बताओ। भाई सिविल इंजीनियरिंग 1 महीने का इंटर्नशिप भी होता था, तो वो मैंने IIT रुड़की से ही किया था फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो मेरा तो इंडस्ट्री का बिल्कुल नहीं था उस टाइम पे, और अब मैं इंडस्ट्री में ही काम कर रही हूँ। ये तो सरकार ने काफ़ी कर रहा है, और इसके से कह रहा हूँ कि स्टार्टअप के लिए बहुत लिक्विडिटी है। अब हम लोग भी जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने जेनेसिस प्रोग्राम निकाला स्पेशली Tier 2 और Tier 3 टाउन के लिए। इसमें वो स्टार्टअप जो छोटे शहरों में हैं उनको हम 10-10 लाख रुपए तक की मदद दे सकें कि वो अपना स्टार्टअप कर सकें। स्पर्श करके DBT का एक प्रोग्राम आता है जिसमें सिर्फ ये कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में होते हैं, सोशल इनोवेशन से होते हैं, उनको हम मंथली एक 60,000 रुपए का हेल्प कर सकें 18 महीने तक। तो बहुत अच्छे प्रोग्राम ऐसे चल रहे हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए भी काफी अच्छा प्रोग्राम है। तो जितना भी क्लस्टर डेवलपमेंट हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है। Before I hand over to you, ma'am, to conclude the session, हमारा सबसे जो ग्रुप है वो है स्टूडेंट्स। मैं चाहूँगा कि इनकी तरफ से अगर कुछ सवाल आए तो बड़ा अच्छा होगा। जी। आपने कई बार रिपीट किया, आपने भी रिपीट किया, मैंने भी रिपीट किया, जैसे इंडस्ट्री सर बिल्डअप करने के लिए जैसे कोई भी फ्रेमवर्क है सर, इंडस्ट्री के लिए फ्रेमवर्क सरकार कोई भी जनरेटर यहाँ बना रहे हैं सर, इस टाइप ऑफ पॉलिसी एक बार सर आपको पॉलिसी के बारे में सर आप डिस्क्राइब करोगे सर आप? आपका सवाल ये है कि किस तरह की पॉलिसी बनाएंगे या बनी है फॉर द फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। बहुत वाइड सवाल है, ब्रॉड सवाल है। इसको आई थिंक ऐसी कोई लेड डाउन पॉलिसी नहीं है, बिकॉज डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं। आप स्टार्टअप के बारे में पूछना चाहते हैं?
अच्छा अच्छा, तो देखिए स्टार्टअप बनाने के लिए मैं इस सवाल को ले लेता हूँ कि मैं पिछले 8 साल से यही कर रहा हूँ। तो स्टार्टअप बनाने की, स्टार्टअप और इंडस्ट्री दो अलग अलग चीजें हैं। इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, स्टार्टअप इज वन कंपनी। इंडस्ट्री मतलब मल्टीपल कंपनीज वर्किंग इन वन सेक्टर, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। ठीक है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। स्टार्टअप इज अ एंटिटी, एक कंपनी होती है और वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। स्टार्टअप को बनाने का लिए बड़े सिंपल है, आप किसी भी सीएस के पास जाइए। सबसे मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हिंदी में कहावत है, जिसका काम उसी को साझे। ठीक है, सीएस का काम सीएस को कर दे दीजिए, उसमें आप अपना दिमाग मत लगाइए, वो आपकी कंपनी बना देगा 15-20 दिन। आपका काम ये है कि आप ये सोचें कि आपकी कंपनी करेगी क्या। ठीक है, उससे पहले आप ये सोचें कि कहाँ पे डिमांड गैप है, कहाँ पे आपको कोई ऐसी डिमांड दिख रही है जो कि अनमेट डिमांड है। अनमेट का मतलब ये है कि लोगों का पेन पॉइंट है लेकिन कोई उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, या अगर कोई सॉल्व कर रहा है तो वो महंगा सॉल्व कर रहा है। क्या आप उसको सस्ते में, कम रिसोर्सेज में सॉल्व कर सकते हैं, या अगर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको पॉइंट में प्रोडक्ट को कोई अभी कंपनी सेक्रेटरी बनाएगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा, उसके अंदर इसको बनाने, कंपनी बनाने के लिए आप अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उसमें जाए कि एमओए कैसे ड्राफ्ट करते हैं और एओए कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कतई मत जाइए। वो उसको काम दे दिए, 10-15 हज़ार में कंपनी बन जाएगी। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो कंपनी क्या बेचेगी, वो कंपनी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है और उसको आप आगे कैसे लेके जाएंगे। हम दो चीज़ों पे मेन फोकस करते हैं, whether your idea is good enough, ठीक है, whether your idea is big enough, क्या आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। अगर छोटी प्रॉब्लम है तो मार्केट साइज उसका बहुत छोटा होगा, आपको ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। तो क्या इज इट बिग इनफ, इज इट गुड इनफ। और दूसरी चीज ये कि आपका सॉल्यूशन गुड टू हैव नहीं होना चाहिए, नीड टू हैव होना चाहिए। मतलब क्या, नेसेसरी होना चाहिए, लग्जरी नहीं होना चाहिए। अगर इस हॉल के अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप के कैसेट एसी लगा दें, ठीक है, जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, तो ये लग्जरी होगी कि हाँ ठीक है टेम्परेचर और कम होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हाँ ये टेम्परेचर कुछ मेंटेन, दैट इज नीड टू हैव एंड गुड टू हैव। ये तीन चीजें ध्यान रखिए, आपकी कंपनी बन जाएगी। सर आपने जो स्टूडेंट्स को लेके जी स्टार्टअप में सर आपने एक चीज और बोली थी, जैसे स्टूडेंट्स को लेके, हाँ, तो एक सर पॉजिटिव वे हो गया और एक नेगेटिव वे हो गया एज अ एटीट्यूड। बिल्कुल सर उस चीज के बारे में सर थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। सर क्योंकि सर एटीट्यूड सर बहुत से होते हैं, एक तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। सर जो कि वर्क करते हैं सर बहुत पॉजिटिव वे में करते हैं, एक नेगेटिव वे में करते हैं। सर अगर पॉजिटिव वे में सर कर रहे हैं सर समझ नहीं पाता है, लाइक सर सचिन सर बैठ जाओ, बोल नहीं पा रहा। और जैसे अगर किसी चीज सर अगर आप नेगेटिव वे में बोलते हो, जैसे किसी को सर जैसे किसी चीज को शांत करके बोल दो या फिर मतलब एकदम जोर से बोल दो, हाँ, सर नेगेटिव वे हो गया। किसी चीज को आप शांत होके मतलब अच्छे से बता रहे हो तो पॉजिटिव वे हो गया। सर पॉजिटिव वे को सर आजकल कोई समझता नहीं, और जैसे नेगेटिव वे हो गया शांत करके, जैसे लाइक सर क्लास हॉल चल रहा है, सर क्लास हॉल चल रहा है, सर टीचर्स को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो सर जब वो एकदम सर नेगेटिव वे में हो गया, जब शार्पली चिल्ला के सर बोल रहे हैं तो पूरी क्लास कोऑपरेट करती है। ये जैसे बोल रहे हैं, ये कौन सा एटीट्यूड है आपका? सर पॉजिटिव। तो जब आप बोल रहे हैं पॉजिटिव है तो यही रखिए ना अपने साथ। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है ऐसे बोलना खुद को, यही है ना, हमको यही एटीट्यूड चाहिए। मैंने शुरू में कहा था कि हम तब भी ठीक ठाक कर लेंगे, एटीट्यूड सॉलिड चाहिए। स्टार्टिंग में आपने जो इंडस्ट्री को लेकर आप बोलने चले क्योंकि 42 वर्कर्स की नीड है इंडस्ट्री, 42 वर्कर्स की नीड है आपको। जैसे इसमें से रॉ मटेरियल में हो गया, डिफरेंट टीम्स जो भी आपने
स्टार्टिंग बोला था स्किल्स हो, एटीट्यूड हो और जो भी लाइक एटीट्यूड मतलब वो काम करने की जुझारू पर किस फील्ड में उसको सर हॉबी आ रही है, किस फील्ड में नहीं आ रही है, जैसे कोई मैकेनिकल में हो गया कोई और सर जैसे हम उसको मौका देंगे कि वो कहाँ जाना चाहता हाँ है। सर हम ये खुद नहीं बोलेंगे आपको ये करना है, हम उसको मौका देंगे उसको देंगे कि वो कौन सी पोजीशन के लिए इंटरव्यू लेना चाहता है, देना चाहता है। थैंक यू सर। आई थिंक आपका सवाल थोड़ा एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर ज़्यादा था कि क्या हम एम्प्लॉयबल कैसे बने, और उसमें मैं थोड़ा ऐड ये करना चाहता हूँ कि शायद सॉफ्ट स्किल पे और ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मैं भी इस पे प्लेसमेंट में बैठता था तो ये होता था कि भाई हम टेक्निकल तो पढ़ते जाते हैं, लेकिन टेक्निकल के साथ साथ इंडस्ट्री में प्रेजेंटेबल कैरेक्टर चाहिए जो कस्टमर से बात कर सके, क्लाइंट से बात कर सके, किसी मीटिंग में बैठ सके। तो वो सॉफ्ट स्किल्स होना बड़ा जरूरी है ना। सॉफ्ट स्किल का मतलब होता है कि आपकी पर्सनालिटी लाइकेबल हो, कि लोग जो है वो आप जब आए तो आपको देख के खुश हो, बजाय ये कहें कि अरे मुझसे आ गया। तो लाइकेबिलिटी जो होती है वो ऐसी होती है कि आवाज तेज करना या धीमे करना मायने नहीं है, मायने ये है कि उस आवाज में क्या तलखी है, उस आवाज में क्या डिस्डेन है। आप फर्म हो सकते हैं लेकिन कंटेम्पचुअस नहीं हो सकते। आप अपनी बात को फर्मली रखिए, जैसे कि मतलब फर्मली मतलब ये होता है कि आप किसी से इन मैनर नहीं आर्ग्यू नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी बात जरूर रख रहे हैं और अपनी बात रखना आवश्यक है। ये दो अलग अलग बातें हैं, बीइंग कंटेम्पचुअस अवहेलनात्मक होना और बीइंग फर्म। ठीक है, इसमें आप जरूर फर्क समझ जाइए। आवाज का तेज करने का मतलब हमेशा, मुझे मेरे बॉस ने एक बात बताई थी, आप भी याद रखना, मुझे तो काफी बार साल बाद पता लगा। पहले दो चीजें, एक तो कभी आप अपने बॉस की बुराई मत कीजिए, क्योंकि आप किसी से नहीं करेंगे वो पहुंच जाएगी इंडस्ट्री में, है ना। पहली बात, अगर आप सोच रहे हो दोस्त से कर रहा हूँ वो नहीं बोलेगा, पक्का बोलेगा, ठीक है, कभी मत कीजिए। दूसरी चीज ये, कभी भी आप अगर बॉस से बात कर रहे हैं तो तेज आवाज में बात मत करिए, चाहे आप उससे अग्री ना करते हो। आप अग्री नहीं करते हैं तब भी आप आराम से बताइए कि सर आई बेग टू डिसएग्री। एक तरीका ये होता है और एक तरीका होता है सर मैं नहीं मानता आपकी बात, आप आ रहे हैं। क्या तरीका अच्छा है? वो आपकी बात कब सुनेगा जब आप कहेंगे सर आई बेग टू डिसएग्री, आपकी बात में पॉइंट है, लेकिन क्या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं? Now you are asking him, you are also invoking his thought process. ठीक है, आप उनके सोचने की क्षमता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये भी एक पॉइंट हो सकता है। ये होती है लाइकेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स, और ये ट्रेट्स फाउंडर्स में भी बहुत जरूरी हैं, ये ट्रेट्स एम्प्लॉइज में भी बहुत जरूरी हैं, और ये ट्रेट्स जिंदगी के आपकी लाइफ की हर एस्पेक्ट में बहुत जरूरी है। आप शादी करने में जाएंगे ना तो भी अगर आप अपनी होने वाली वाइफ से बोलोगे क्या कर रही है तू, भागे यहाँ से, तो कह रहे हैं लायबिलिटी है। यही हम लोग बात कर रहे हैं जब हम एम्प्लॉयबिलिटी की बात। टेक्निकल नॉलेज इज टेकन फॉर ग्रांटेड, उसमें तो कोई नेगोशिएशन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो आपका होना ही चाहिए उच्च स्तरीय, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके ऊपर यू नीड टू हैव अ लेयर ऑफ विजडम। विजडम क्या होता है? नॉलेज गेट बाय एक्सपीरियंस। इट इज नॉट जस्ट नॉलेज व्हिच पीपल आर लुकिंग फॉर, पीपल आर लुकिंग फॉर स्किल स्मार्टनेस। In some cases, people are looking for कि हाँ वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेगा, आप समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें ग्राउंडेड, वेल ग्राउंडेड पर्सनालिटी का पार्ट है, और वो आपको एक दिन में नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ बैठ करके आपको 4 बोल बोल देगा इंक्लूडिंग मी, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। वो एक प्रोसेस है, इट इज नॉट एन इवेंट, ये घटना नहीं है, ये पूरा एक मेथड है। दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। सर एक्चुअली मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। माइक आप सबसे सर, मैं इलेक्ट्रिसिटी से रिवर्ट होकर एकेडमिक में आया हूँ। मैं 2011 का पास आउट हूँ इसी कॉलेज से। मेरा पहला क्वेश्चन है सर, आजकल मार्केट में जो मेडिसिन चल रहे हैं, मेडिसिन को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब हैं, जैसे एमआरपी को लेकर के, रेट को लेकर के, क्योंकि हम उस चीज़ को जैसे एमआर होने के वास्ते नहीं हम जाएं तो हम उस चीज़ को बेचते हुए अपने जूते घिस देते हैं, लेकिन बिक नहीं पाती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो
ना चाहते हुए भी दुकान पर से लेके जाता है। उसकी दो चीज़ें समझ में आई मुझे कि उसमें क्वालिटी होती है, बट क्वालिटी हमने भी दिया, हमने 11 साल लगभग काम किया इंडस्ट्री में, क्वालिटी हमने भी दिया। वो चीज़ 11 रुपये की स्टिक बेच रहे हैं, लेकिन वो 11 रुपये की गोली बेचते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड क्वेश्चन सर, एकेडमिक में आए तो हमें पता लगा सर, हमारे टाइम पे होता था स्टूडेंट्स कॉलेज में चल गया था, एडमिशन लेने के लिए लाइन लगी होती थी, फीस देने के लिए समय होता था, उससे पहले हमें सबमिट करनी होती थी, मतलब स्टूडेंट्स का रुझान रहता था कॉलेज से टच होने का। बट आज स्टूडेंट्स कॉलेज में आने को रेडी नहीं है, कॉलेज में सीटें हैं लेकिन वो फिल होने को रेडी नहीं है, उसके पीछे क्या खोज रहा होगा। तीसरी चीज़ सर हमारे लिए है, जैसे हम एक, अभी सर ने पूछा था एक क्वेश्चन, उन्होंने कहा था कि स्टेबलिश होने के लिए, फार्मा फील्ड से स्टेबलिश होने के लिए हमें कोई स्टेप लेना है, तो स्टार्टिंग स्टेबलिश मतलब होलसेल रिटेलर में देखिएगा, उसमें भी कंपटीशन है, बट कंपटीशन के साथ साथ यदि हम जाएँ तो वही चीज़ मार्केट में इतना कंपटीशन हो गया है कि जो 2 रुपये की चीज़ है जो हम खरीद रहे हैं, उस पर 2.5% मार्जिन पे भी हम उसे बेचें तो भी स्टेबलिश नहीं हो पाते। आप मार्केटिंग में थे, सेल्स में थे? सर मैं मैन्युफैक्चरिंग में था। मैन्युफैक्चरिंग जी, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कैरियर बायोलॉजिकल लिवान से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं जेंटिस्ट एमक्योर में गया, फिर मैंने गिलास में काम किया सर, और गिलास में काम करके फिर आइकम्स में मैक्स स्टोर प्लांट में काम किया। आफ्टर दैट फिर मैंने एक एमएम फार्मा की ब्रांच है रुड़की से देहरादून चलावी में, वहाँ पे काम किया। तो सितंबर 2022 को मैं वहाँ से रिवर्स हुआ। तो देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछे ना, वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन के थे। वो जो एक बोला कि आपने कि वो एक है, वो चलता है, उसका प्राइस हुआ है, तो वो क्वालिटी आपने तो देखा होगा ना, जेनरिक भी होता है सर मेन कोर्स मेरा वो है, मेन कोर्स मेरा मार्केटिंग होती है सर, मेन कोर्स मेरा वो है। मतलब मेन, हालांकि मैं किसी कंपनी को नहीं कहना चाहता कि ओपन फील्ड है। जैसे मैं बात करूं इप्का कंपनी की, 0 एसपी मिलती है, 0 एसपी आज भी 99 समथिंग सिस्टम आती है। जब यूथेनिक्स कंपनी एक मेरे पास आती है, मेरे एक भाई हैं मेडिटेशन चलाते हैं, तो उसमें देखा मैंने वो 7.5 रुपए की स्ट्रिप बेच जाता है, पर उसमें क्या कोड रहा, डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासीटामोल दे रहे हैं, डाइक्लोफेनेक सोडियम पैरासीटामोल वो भी दे रहे हैं, बट वो 13 रुपए को दे रहा है, वो 0.75 पैसा की गोली दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने अच्छी मार्केटिंग की है। $0 एसपी आपको देखो, $0 एसपी याद है, वो जो दूसरा वो 0.75 पैसे वाला है, उसका ब्रांड क्या है, कंपनी का नाम क्या है? सर यूथेनिक्स कंपनी है, नाइसियस के नाम से आती है। हाँ, तो वो जेनरिक में है ना, दे आर गिविंग एट द जेनरिक और उन्होंने मार्केटिंग नहीं की, उन्होंने डायरेक्टली रिटेलर्स को दिया। सर मैं यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूँगा, जैसे आपने भी बात की जेनिक, सर जेनिक क्या होता है, मतलब इसमें सभी पूछते हैं, जेनिक पर डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए बात क्या होगा? देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक होता है कि प्रॉपर मार्केटिंग होती है थ्रू एससीपी, ब्रांड बिल्डिंग होती है, ओके, मार्केट एनालिसिस होता है, मार्केट ट्रेंड्स होते हैं, उसके पीछे पीएमटी होता है, और जो मेन एससीपीज मतलब जहाँ जो मेन इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे बात करना। सो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व। 75% से 80% तक मार्केटिंग का बजट होता है। जो आप बोल लेना 13 रुपए और वो जो 13 रुपए का है ये नहीं है, उसके बाद नोट ऑफ वो जो अभी सर बता रहे थे रेगुलेटरी गाइडलाइंस, तो आप अगर इनका भी देखेंगे थॉरो, उनके 4 यूनिवर्सिटी के प्लांट है, और जहाँ $0 एसपी बनता है वो भी प्लांट WHO GMP है, एंड इट इज फिक्स अप्रूव। सर आई एम आल्सो वर्क आउट इन इप्का। तो सही बोल रहा हूँ सर। अभी एक और डिफरेंस होता है, मैं बताऊं, मतलब आई एम नॉट फ्रॉम द फार्मा फील्ड, बट ये जो जेनरिक होती है और जो इथिकल जो मेडिसिन्स होती हैं, अभी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने ये बताया कि जो इथिकल मेडिसिन्स होती हैं वो रिटर्न नहीं होती हैं। अगर एक्सपायर डेट हो गई और अगर किसी वो बची हुई है तो उसका रिटर्न नहीं होता। तो कोई सी भी नहीं होती ना। नहीं, वो जेनरिक वाली नहीं होती है, वो बाकी वाली होती है। इथिकल भी नहीं होती। अच्छा, आई थिंक ये थोड़ा डिस्कशन का टॉपिक है, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन लेंगे। एनी अदर क्वेश्चन? टॉपिक, या प्लीज स्टिक टू द टॉपिक एंड आल्सो बी वेरी क्लियर अबाउट द क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन क्या है?
I have a question and a suggestion too. I would like to hear from Professor Salah, please. As you have told that the pharmacy curriculum is going to be revised in next 1 or 2 years. So as you are also talking about that, we all have been talking about that there is a gap between industry and the curriculum of this pharmacy program. Can we have such a curriculum that like the engineering program has, that they have a first year in common, that's a compulsory subject, then after they divide it into batches, into the branches, like civil engineering, mechanical engineering, others. So can we have such type of curriculum for pharmacy too, that there are several types of students, that those who wants to go into the industry, those who want to pursue the higher studies, those who want to go for the entrepreneurship. So can we have such curriculum that after second year or third year, those who wish to pursue their career in industry, they can they will have the curriculum for that industry-oriented subjects. Those who pursue career in the hospital pharmacy, then they would have the have to study the subjects of that hospital pharmacy. So, what are your suggestions for that? I really welcome that question. And in fact, when I was talking about the change in curriculum, and I was replying to Sir Rajesh, most probably what I know from my sources, because it is project coming to the public domain, exactly यही होने वाला है जो आप कह रहे हैं. Then probably in the third year and the final year, we will be having division, whereupon somebody can go into practice, some into manufacturing, some into say quality assurance and control. That kind of a syllabus is being drafted by the pharmacy consultant. So hopefully वो आ जाए और फिर once it comes into the public domain, as I said, कि हम over and above चलते हैं KT में. So what I will try to do is कि पहले उनको देना दो, I'll incorporate some more things in that. That's what I will try. One more suggestion is that if we are going for such a framework, the assessment of that relevant field should be done with the means if the student is pursuing for industry. So assessment should be done by the industry itself. See, that's where the problem comes. हमारे यहाँ कुछ regulations ऐसे होते हैं ना, वो हमारे हाथ पर काम देते हैं, वो करके काम करो. तो we have to follow these CA norms on that. एक बार उनको देने दीजिए. Let us see what we can do at the university level. Good afternoon to the panel. So my question is that you guys were discussing about ethics, that ethics is a very fine line when it comes to AI. So my question is, what exactly are those ethical concerns related to AI, particularly regarding AI-driven assessments? आप ना ऐसा करो कि चैट जीपीटी पे ये टाइप करो, आपको कम से कम 10 पॉइंट मिलेंगे इस पे. चैट जीपीटी की बहुत अच्छी बात है कि वो हर चीज पॉइंटेड फॉर्म में देता है. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईपी की, जो मुझे समझ में आती है कि किसी ने बड़ी मेहनत करके एक चीज बनाई या लिखी या पिक्चर क्लिक करी और आपने बिना किसी परमिशन के उसको उठा लिया और उसको एक अपने डॉक्यूमेंट में शेयर कर दिया और यूज कर लिया और उसके बाद कहा कि ये मैंने बनाया है. ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है एआई के साथ, क्योंकि आपका जो every content is available free of cost online. What AI is doing is merely scanning the data which is available into several databases और उसको करके वो कंज्यूर करके अपनी लर्निंग के हिसाब से एक क्रिएट कर रहा है. Now, will you call that a new document when it has verbatim picked up lines from some other document? हम लोग जब थीसिस सबमिट करते हैं तो हम लोग उसमें चेक करते हैं कि प्लेजरिज्म कितना है और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. और देन जो जिसने भी वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया वो खुला खुला कह रहा है कि हाँ ये मैंने बनाया है क्योंकि मैंने उसमें 10% 15% चेंज कर दिया. And just think about the plight of that particular poor soul who has burned the midnight oil to create a document, put it in good faith in the public so that everybody can read, and it has been used without giving credit.
सबसे बड़ा एथिकल कंसर्न तो मुझे ये कि या प्लीज जब सर बात करते हैं एथिक्स की तो मेरे ख्याल से मॉरलिटी पहले आती है। और अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें, जब कोई गाइडलाइंस नहीं थी, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे, तब भी डेवलपमेंट होती थी, साइंटिफिक काम होता था, ऑथेंटिक होता था। अभी तक डिसअप्रूव नहीं हुआ वो, proven to be correct. So that's what is the ethics. So it's your morality as a professional, trained professional, that you create something or you tell something or you develop something which complies with all the need, all the requirements. So there are scientific backgrounds, there are morality backgrounds, there are regulatory backgrounds, there are guidance, there are laws. So all those there, but morality is the first. You know it better. I think he's already covered that. Said you know it better that ये गलत है कि सही है. आपको पता है. आगे आप. So you know it. So when you know it, so why to do wrong things? आगे वो content नहीं होगा. It's a pitch of it. मैं एक CEO का इंटरव्यू देख रहा था यही का टॉपिक है. Hello. यही का कंपनी का सीईओ है, उसने पता क्या था, आपके लिए है, मेरे लिए भी है, दिस मॉडल इज अ मिक्स ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसने लास्ट में ये कहा, प्लीज एडमायर योर्स। सो इटसेल्फ ही इज रनिंग 5 बिलियन डॉलर की कंपनी का, he says कि AI will be there, लेकिन वो ह्यूमन intelligence or thought process to cross any line. So this is what ethics is. AI की कंपनी चलाने वाला सीईओ खुद कह रहा है कि हाँ, हमको कोई नहीं। Just one thing I'll add here. Ethics हमें सिर्फ study to research में life में तो you know it also, है ना? आपको जवाब मिला? Maybe I can add one more point. एक बात ये समझो, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका यूज अच्छा या बुरा होता है। मेल बड़ी इनॉक्यूअस टेक्नोलॉजी है जीमेल की, उसको आप यूज कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए भी, और उसको यूज कर सकते हो किसी को थ्रेटन करने के लिए। टेक्नोलॉजी, एनी टेक्नोलॉजी फॉर दैट मैटर, these are foundational technologies. They are merely vehicles to carry your usage depends upon individual. आपको चोरी करने का मन है तो आप चोरी कर लोगे, अगेन इंडिविजुअल। आपको कुछ उससे अच्छा क्रिएट करने का मन है या लर्निंग का मन है तो आप कर लोगे। एथिक्स इज प्रीटी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। टेक इट एज अ हेल्प, उसको आदत मत बनाओ। हम मिस हो गए नहीं हुए। You have a question. In fact, I have a suggestion. It was a very good calibration about academia and industry collaboration. So what I see that so far we have a framework that students will come for internship or training program, but there is no control on it and there is no seriousness on it. As the industry stalwart said, that industry people cannot waste time with the students and they try to restrain it. So my suggestion is, we have stalwarts from DPSRU and AKTU, both the professors are here. So if they can come out with a framework which will allow the faculty members to go for industry work, I will not say training, to go for work in industry for a year. Like universities have been sponsoring for master's program, they sponsor for Pharma and Tech, they sponsor for PhD. So that is all in direction of academics. So let the academia think about how they can participate with industry. So my suggestion is that we should work on a framework that a professor will come on deputation to industry and work for a year and then go back to academics.
So that will give a real input in the academia about the industry. So I request that you can take this idea and deliberate at your university level. So that so far there is no such program. But I don't think there should be any hesitation in implementing it. Thank you, sir. It's a really good idea. And we were already discussing this, if faculty को जाना चाहिए. There are certain issues which will come. And the institution where a faculty member is working, काम कर रहा होगा naturally. मैं उसको एक साल के लिए deputation of भेजूंगा. Who's going to pay for that 1 year tenure? That is the biggest issue that is going to come. जहाँ पैसा आता है तो यूनिवर्सिटी भी हाथ खड़े कर देती है, मैनेजमेंट भी हाथ खड़े कर देती है. तो अल्टीमेटली वी हैव टू वर्क आउट अ वे कि उसका एक साल का जो भी कॉस्ट है वो किसको बेयर करना है, और द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी इतने टीचर्स के लिए ये कर पाना शायद संभव ही नहीं होगा. इसका भी कोई प्रोविजन कहीं नहीं है, इंक्लूडिंग यूजीसी. सो ऊपर से आना पड़ेगा. If at all it has to come, it's a good idea, but how to implement it, even I am right now I am not in a position to answer. क्योंकि एक साल तो उसका पैसा कहाँ जाएगा, and without that sustaining it's very difficult. तो स्टेक होल्डर्स यदि साथ देखूं और एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, क्योंकि ऐसा आइडिया भी है नहीं सर कहीं, तब शायद इसके बारे में सोचें. This idea has come from your deliberation, sir. So, and it is not easy. I know it is not easy, it is a policy matter. It will be very, very difficult, but it will be a wonderful idea. You know, sir, I tell you one example. About 10 years ago, I took some retired general managers from HFT into academics. So my professors, they resisted it. And after 10 years now, AICT has accepted professor by practice. And my experience was that those professors have done wonderful work for my students. Wonderful work. So it is up to academia people to consider it. I am not saying it will be implemented tomorrow. See, the idea I taken up 15 years ago is implemented now in the ICT. So this is my idea. सर एक महीने से स्टार्ट करें, एटलीस्ट वो शुरू हो. एक महीना शायद कॉलेज भी पैसा दे देगा, सैलरी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और नहीं भी होगा तो दैट फैकल्टी मेंबर कैन सस्टेन आल्सो फॉर अ मंथ. या इसमें एक और छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में भी आ रहा है, हम क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग में ये नहीं कर सकते कि इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? That is already there. AICT has done it. नहीं वो होता ना. How many people from the industry we have in the meeting? आपके पास है, but overall मैं बात कर रहा हूँ. It may be 1%. It may be 1%. That is not the sad part. That is what is my idea, that we can start with one teacher from one university, going to some industry, and then we can analyze it, how it goes. See, as far as financials are concerned, even industry can share, and we may have to give some incentive to the professor to go to industry, because he is giving competitive life. So can the industry doesn't do charity? No, because he is giving it. No, it is up to university. I fully agree. एक महीने वाला जो proposal है, probably मैं जरूर आप इसको take up करिए. मैं कर council, I do it. Definitely I do it. Because somebody has to start. हाँ. I've been with the industry, मुझे मालूम है कितना फायदा होता है. Somebody has to start. Industry will not start, because industry aim is to create something, and their aim is commercial. Whereas academia aim is to develop the nation. नहीं महीने का बाद. Yes. Something has to be started. Yes. Thank you. Thank you. One last question. Ma'am, there are a lot of ideas which our students are also having regarding research, but they don't get the opportunity to pick and where to reach, where
whom to talk. But is there a platform where our students, if they have good ideas regarding research, they can pitch to someone so that we can do good in our research? Are you talking about research ideas for startup or research ideas for doing research? For both, actually. For both? Both are different. दोनों अलग हैं? दोनों का If I talk about research, see, I'll tell you. जैसे AICT had a QIP program. Under that, there were QIP centers. So QIP centers, DPSR also was one of the QIP centers. So उस program के अंदर एक scene था, वहाँ पे like you know the pharmacy institutes, any faculty working in any pharmacy institute in India could take up PhD for in one of the QIP centers. For example, a faculty working in Tamil Nadu could come to Delhi, DPSR and do the PhD there, get the mentorship of the faculty and utilize the facilities of the institute. So, and in that, AICT pays the faculty and 50% is paid by the faculty अपना host college. So इस तरह के scheme बहुत अच्छी हैं जिसमें anyone can the faculties can come and continue their research. So this was the PhD program. And when you talk of research as a scholar, okay, I think all the academic institutes, they are happy, they are open enough to mentor and welcome any student जो उनसे research mentorship लेना चाहते हैं. कोई मना नहीं करता. It becomes very difficult to get the knowledge about such schemes because no, ये scheme तो खैर अब पास में हो गया है. It has stopped now. But like you can approach to any scientist, any researcher, any faculty who's doing research in universities or colleges. We have to reach to them first. Yes, that is the first step. But that's a difficult task. How we can make this? No one is. Mail them, call them, they will revert back. Sincerity दिखाओगे तो definitely आपको result मिलेगा. Thank you so much. I think so we'll just conclude the panel discussion. One last question from our side of students, please. One last, please. So that they should not feel that we get a chance. मैम हमारा क्वेश्चन है जैसे आपने बोला कि इंडस्ट्री चैरिटी नहीं कराती, सर ने बोला कि इंडस्ट्री चैरिटी नहीं कराती है, बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए. तो बच्चे को इंटरेस्ट जब डेवलप हुआ ना तब उसको पता होगा कि इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क करना चाहिए, किस तरीके से वर्क होता है. बहुत सही बात कही आपने. तो हम लोग 4 साल जो डिग्री लेते हैं वो इसलिए लेते हैं. लेकिन सर उसमें ये पूरा पता नहीं चल पाता बच्चों को कि इंडस्ट्री में एक्चुअली होता क्या है. आप सबने बोला कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं और आगे करके हमें कुछ और ही पता चल रहा है कि इसमें हमें ये करना चाहिए था, हमें ये पता होना चाहिए था. दैट्स राइट. इंडस्ट्री इनिशियली क्या चाहती है कि आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और प्रैक्टिकल बैकग्राउंड जो आप फार्मेसी में पढ़ते हैं वो सॉलिड होना चाहिए, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए. अगर वो लेवल आप क्रॉस करते हैं इंडस्ट्री विल वेलकम यू विद रेड कार्पेट. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे देगी इंडस्ट्री, बट थ्योरेटिकली स्किल आपको दिखानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि यस आई नो दिस. अगर आप 4 बेसिक क्वेश्चन में से एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे तो इंडस्ट्री विल से सॉरी. सो यू हैव टू सी एवरीबॉडी इज सेइंग व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग कि आप अपना जो काम है, अपना जो ये टेन्योर है 4 साल का, इसको लर्निंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, डाइवर्सिफाइड स्किल के लिए, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए फुली यूटिलाइज करो. ग्रुप बनाओ, टॉक टू द पीपल, टॉक टू द फैकल्टी और दूसरे डिपार्टमेंट्स से उनसे बात करो. आप अगर क्लास नहीं अटेंड करोगे और रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के आप सोचोगे कि मुझे आ गया, तो विजडम नहीं आएगा, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं आएगी. अब सपोज कि मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं स्टैंड कर रहा हूँ कि मैंने पीएच की डेफिनेशन पूछ ली किसी से और उसका एप्लीकेशन पूछ लिया, कितने बच्चे बता पाएंगे फार्मास्यूटिकल फील्ड में? 10 में से एक भी नहीं बता पाएंगे. पीएच की डेफिनेशन बता सकते हैं
बट एप्लीकेशन पे फेलियर। सो वही चीज आपको लर्न करनी है अपने 4 साल में। फार्मेसी करिकुलम इज सच ए वास्ट करिकुलम कि आप सब कुछ पढ़ते हैं। मैं वंडर करता था कि मैं मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहा हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों पढ़ रहा हूँ, बट जैसे ही मैं लैडर पे आऊंगा तो मुझे पता चलता कि प्रोजेक्ट तो मुझे लगाना है। तो दैट इंजीनियरिंग ड्राइंग जो मैंने उस टाइम पढ़ी थी वो मेरे काम आई, एंड आई एम एबल टू डिक्टेट द इंजीनियर्स बिकॉज मुझे पता है तेरे रूल्स क्या है, फार्मेसी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट क्या है, रेगुलेशंस क्या है। तो आपका जो 4 साल है वो आपको यू हैव टू गिव फुली टू इट, लर्न एवरीथिंग, डिस्कस एवरीथिंग, डिबेट एवरीथिंग, करंट प्रैक्टिसेस। आप लोग कितने लोग हैं जो यूएसपीटीओ की वेबसाइट खोलते हैं, पेटेंट वाइपो की वेबसाइट खोलते हैं, फ्री डोमेन में पेटेंट के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, शेड्यूल एक्ट क्या है, नोबडी, सब फ्रीली अवेलेबल है। आपको बस वो 10 नंबर के मार्क्स के लिए जो पढ़ना है, वो 4 लाइनें जो लिखनी है वो पढ़ना है बस। So there are ways, there are people in faculty, those who have some exposure to it, और वो आपको गाइड करेंगे। आप जाएंगे, एक बार जाएंगे, मना करेंगे, 2 बार जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, he is passionate about it. They will help you, like मैडम said कि आप अप्रोच करोगे तो हेल्प करेंगे, मेंटर मिलेगा आपको हमेशा, बट यू हैव टू अप्रोच, यू हैव टू शो दैट जो आपने 4 साल लगाए हैं वो वेस्ट नहीं किया। सो देन एवरीबॉडी विल वेलकम यू, एंड आई कैन अश्योर यू, अगर आपने किसी अपने थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के अगर 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे किसी ने और आपने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया, आपको रेड कार्पेट मिलेगा। और आपने 1 साल की ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा सा कुछ करके दिखा दिया तो द स्काई इज द लिमिट। सो यू हैव टू एक्चुअली वर्क अपॉन दैट। थैंक यू सर। Madam, you are a faculty member or you are a student? I'm a student, sir. As a student. Probably final year? Yes, sir. ये बताइए, अभी जो डिस्कशन हो रहा था सर ने जो कहा, see, even I am disappointed at the level of knowledge that people have nowadays. हम लोग रोते रहते हैं, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप सर के पास इंटरव्यू देने जाएंगे, आपने स्ट्राइल प्रिपरेशंस पढ़ ली, I am just asking you a very simple question. उसमें एक शब्द आता है लैमिनार फ्लो, बेंच, जिसमें कभी डिटेल किया उसमें? चलिए कोई बात नहीं किया। अब यदि मैं उसमें पूछूं उसको पढ़ा कहाँ से, या लेमिनार फ्लो में एयर स्पीड कितनी होती है, हम लोग ये पढ़ते थे, और मैं केमिस्ट्री से हूँ, दिस इज नॉट केमिस्ट्री। थोड़ा उठाइए, हाँ बेटा सुटिक्स में जाएगा ये, माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। जब आप थोड़ा अपने आप को उठाएंगे तो फिर इनकी चैरिटी की हमें जरूरत भी नहीं है, हम खुद कर लेंगे। See, actually, when हम जब सीखते हैं, when we study, चाहे आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो you don't have to limit yourself जो आपको सिलेबस में लिमिट नहीं करना है। जैसे आपको सर ने कुछ साइट्स बताई, ये this curiosity has to come from your inside that you need to learn। जब आप अपना horizon broader करेंगे, जब अपना knowledge broader करेंगे, तभी आप you don't have to perform 100%, you have to perform 200%, then only। So I think now we will not take any other questions, so I would be concluding this panel discussion, and I'm really thankful and heartfelt, humble and thankful to all the panelists who are sitting here with the vast knowledge in academics and industry, and the kind of derivation we had here regarding that we have to, how we can bridge the gap between the industry and academics, and then as Dr. Sraf said, we are also working with the curriculum, which is a question which was raised, so we are already at the solution. We are already, we have started the solution, and it would be fruitful. And when we start, then only the additions happen. पहले हम students के लिए सोचेंगे, फिर faculties का आएगा number, then some other step will come. So likewise, we are going to improvise, and we are going to work with it
work on the integration of academics and industry, and as well as the AI which we were talking about. So we just have to think about 4 aspects. First is strong research foundation. Second is industry support and resources. Third is clear goals and shared vision. And fourth is efficient communication and collaboration. So if we work on these 4 aspects, I think this integration would be very soon and would be successful. So I think with this I would like to conclude. Pandita, thanks a lot of the panel. And thank you to the organizers and thank you to the management for having us all here and deliberating on such an important topic. So congratulations. Thank you. Thank you so much, ma'am. On behalf of everyone, I would like to extend a heartfelt thank you to the esteemed jury for the insightful contribution and guidance throughout the impactful conclave. Your expertise and dedication has truly enriched the experience for all the participants. As the curtains close on this insightful industry academic conclave, a sense of shared purpose and collaboration resonates throughout the room. The discussion, presentation, and networking opportunities has sparked innovative ideas and fostered a deep understanding of the critical intersections between academia and industry. The conclave serves as powerful catalyst for future partnership, research, and awards, and the development of a higher skilled workforce prepared to address the challenges and opportunities of the ever-evolving world. Thank you so much, ma'am. And sir. Thank you so much, ma'am. All good things must come to an end, but every ending is a new beginning. Respected dignitaries, esteemed guests, distinguished speakers, and dear participants, due to time condition, we are going to start our next session, that is valedictory section and valedictory section. So I welcome our valedictory chief guest, that is Professor Shailendra Kumar Saraf. Please give a big round of applause for Sir, Dean AKTU Lucknow, Director DPSRU and IIT Lucknow. I also welcome Professor Shailendra Kumar Saraf, Sir, our valedictory chief guest for the speech. Please, Sir, come forward for the speech. The dice is yours. Please give a big round of applause. Once again, good afternoon. I want to really appreciate and congratulate this institution for taking up a very apt theme for the conference. And the conference, yesterday I was not there, but I have heard that there were some very good speeches and good networking. Today also, a bit of what I